हेलो स्टूडेंट्स, आज आम 7th क्लास रो गोटे चैप्टर स्टार्ट करवा हाउ पुअर वी आर। आमे केते गरीब विषयटा गोटे रिच फैमिली उपरे बेस अच्छी बापा पुअर कथा उपरे बेस अच्छी। तो से विषय को आम डायरेक्ट आम जीवा से विषय एचजीपी को आम एनालिसिस करवा। एचजीपी 1। Once upon a time, there was a very rich man. He, along with his family, lived in a big palatial building on the top of a hill. His house was surrounded by tall boundaries walls like the Chinese Great Wall. The walls were his protection from outside attack. तो एकदा गोटे बहुत धनी लोक सी गोटे पालाटियाल माने गोटे बहुत माने राजवंश भाया घरे सी रोला जोटा कि पहाड़र पूरा शिखर रे थिला। ता घर चारि पाखरे बड़ बड़ प्राचीर मान थिला माने चाइनीज ग्रेट वाल होची हमर गोटे बड़ धरणर प्राचीर जोटा कि चाइनीज लोक मैंने करचंती। तो सही सदृश से घरटा को सी माने बुलेकी रखिथिला आउटसाइड अटैक कौन प्रकार बाह्य शत्रु मानकर आक्रमण रु जेमती ताकू प्रोटेक्ट होई परिवो माने ताकू जेमती केही अटैक करि परिवेनी। ही टू हैड प्राइवेट सोल्जर्स एंड ए बिग बुलडॉग टू प्रोटेक्ट हिम। तार निजर मध्य सैनिक थिले आ गोटे बड़ कुकुर गोटे थिला ताकू बुलडॉग गोटे बहुत शक्तिशाली कुकुर ताकू रक्षा करने पे एमन सब थिले। In moonlit nights, the building looked very beautiful. From there, one could see rivers, small hills, long stretch of paddy fields, small huts of poor farmers scattered all around, all flooded by the magic of moonlight. तो जड़े पूर्णिमार चंद्रर से किरण रे जड़े से उच्चारू से घरर से शिखररू से पूरा देखिपुव सबु प्रकार नई पूरा सुप्रशस्त जो घास पड़िया लोक मानकर घर से मानकर खेत सबु जिनस देखा जाउतला बहुत सुंदर देखा जाउतला चंद्रर किरण रे। ड्यूरिंग मूनलेस डार्क नाइट द बिल्डिंग हैड ए स्पेशल लुक ऑफ इट्स ओन। मूनलेस डार्क नाइट माने अमावास्या रे द बिल्डिंग रे गोटे स्पेशल लुक थिला सेटा कोन आमे एबे जानिबा। The building walls all around the garden inside were lit by lamps. From a distance one could see dazzling stars in the sky, but the small huts were sleeping invisibly at night. तो तार जो सब प्राचीर थिला से गार्डन गुड़ाकरे से गार्डन रे सब लैंप जला होउथला कोनोसी बत्ती जला जाउथला जोड़ा कि बहुत ऊंचा जगह जदि आमे आकाश रो देखिबा माने तळे तारा थिला भलिया जना पड़े आ बाकी अंश जेतिक से घर छड़ा सबू अंधारिया देखा जाए से राति रे। दी रिच मैन लिव्ड देयर लाइक ए किंग वेरी हैप्पीली। हिज हैप्पीनेस गॉट डबल्ड व्हेन ही सॉ द पुअर फार्मर्स लिविंग इन स्मॉल हट्स डाउन द हिल टॉयलिंग वेरी हार्ड इन देयर फील्ड। तो से जो धनी लोकटा राज भाया खुशी रोला किंतु ता खुशीटा द्विगुण हो जाए केतबले ना से गरीब चाषी मान को देखे जो से क्षेत्र में केमी परिश्रम करुँच खटुंच आमी अल्प करे बचुंच आ सी किसी भी न खटिकी केमती राजा भाया रही पारुछि। His only sorrow was that the only son did not like all his richness and glamour. तार गोटे मात्र दुख थिला तार पुओ तार जो गोटे मात्र पुओ से तार जो धनीपण आउ ए जो सौंदर्य विलास को से एते भल पाउनथला एते पसंद करनथला। Often he found him sitting alone in his garden looking down the hill at the poor farmers toiling in their fields and the rivers flowing by. से प्रायतः निज पुओ को गार्डन में बसी पाए जोठी की सी बसिकी तले माने से हिल तले काम करुवा लोक मानू सी देखे नई बही जाऊर देखे। ही वाज फाउंड टू बी वेरी इंडिफरेंट टू ऑल द रिचनेस एंड ग्लैमर ऑफ हिज फादर। से तार बापार तार पितार
ଯେତିକ ସବୁ ବୈବାହିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ଅଛି ୟାଠାରୁ ସି ପୁରା ଅଲଗା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ପାରା ଏବାଉଟ୍? ଦିସ୍ ପାରା ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦି ରିଚନେସ୍ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ and the indifference of his son. Where did the rich man live? The rich man lived in a palatial house on the top of the hill. Where was the building? The building was on the top of the hill. What is his house surrounded by? His house was surrounded by a very big wall like Chinese Great Wall. What were the boundary walls like? The boundary walls were like Chinese Great Wall. What did he have to protect him? What did he have to protect him? He had his private soldiers and a big bulldog to protect him. How did the building look in a moonlit night? तो ये पर लिखा जाइए moonlit night केमती देखा जाउची से पोर्शन टा लिखिबो. A moonlit night the building looked very beautifully. ए गोटे लाइन लिखि परिबो न चाहिले भी किछ ऐड कर परिबो. From there one could see river and small hills, long stretch paddy fields, small huts of poor farmers scattered all around. एति लिख परिबो न फर्स्ट लाइन टा भी लिख परिबो. Very beautiful जाय भी लिखि परिबो. What could one see from the building? One could see ए जो लाइन टा रहिला अछि ब्यूटीफुल पर पर जो अछि. One could see the river, small hills, long stretchy paddy fields, small huts of poor farmers scattered all around. एतिकी लिखिबो एटी फुल स्टॉप मारिबो. तापरे what was something special of the building and when? तो एटा स्पेशल जिनसटा कोन एटा होची मूनलेस डार्क नाइट रे. तो ए लाइन टा पूरा लिखिबो. During moonless dark night, the building had a special look of its own. The building ना खाली गोटे लाइन ही लिखिबो. During moonless dark night, the building had a special look of its own. एतिकी. तापरे the small huts were sleeping invisibly at night. Why? Because in moonless dark night the small huts have no lights of their own. Have no light. LIGHT light माने आलोक. How did the rich man live there? The rich man lived like a king there. And the rich man lived there like a king happily. When was his happiness got double? His happiness got double when he saw poor farmers were toiling in their fields. What were the poor farmers doing down the hill? The poor farmers were toiling down the hill. What was the only sorrow? His only is line ta likhibo. His only sorrow was that son. What his only son did not like his richness and glamour. तापरे हमरा से what did the rich man often find him doing? The rich man often found him sitting alone in the garden looking down the hill at the poor farmers toiling in their fields and the river flowing by. ए लाइन टा पूरा लिखिबो. तापरे was the son happy with all the richness or glamour? Which line tells you? First लिखिबो no, the son was not happy with all the richness and the glamour of his father. तो को लाइन ए लाइन टा लिखिबो. His only son did not like his richness and glamour. ए लाइन टा लिखिबो. तापरे what does the word indifferent mean? The word
indifferent mean not similar। तो एतिक है तुम क्वेश्चन आंसर एंड ऑफ SGP 1।